Dear students, now this is your physics practical. In this practical, you will observe how to calculate the density of a matter. And the main aim of the experiment is to determine the density of solid which is denser than water by using a spring balance and a measuring cylinder. Means in this experiment we determine the density of a solid, that is a metal object whose density is higher than water. Clear? And how we will conduct experiment? We will conduct this experiment by using the following materials. First, a spring balance, a measuring cylinder, a beaker which is filled with water, a metal bob whose density you want to calculate, a cotton string and a stand. Okay? These are the metals which are required for the experiment. नेक्स्ट इज व्हाट इज द बेसिक थ्योरी बिहाइंड दिस एक्सपेरिमेंट. मीन्स कि इस एक्सपेरिमेंट में आपको बेसिकली कौन कौन सी टर्म्स हैं जो स्टडी करनी है. फर्स्ट इज डेंसिटी एंड सेकंड इज वेट. क्लियर? देन एज यू ऑल नो व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. In this manner we can calculate the SI unit of density. As we know, the SI unit of mass is kilogram and the SI unit of volume is meter cube. So the SI unit of density is kilogram per meter cube. Clear? Yes. This is the main focus of this experiment. So these are the main points. Clear? तो आपको इन्हीं वाले मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है इसमें. देखिए बच्चे, इस वाले एक्सपेरिमेंट में हमें डिटरमाइन करना है कि जो ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं इट इज डेंसर देन वाटर, कि वो वाटर से क्या है, वो वाटर से डेंसर है. एंड हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट? तो इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं. एज यू ऑल नो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. तो व्हाट आर द 3 मेन कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज जिस भी ऑब्जेक्ट को आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें हमने एक मेटल बॉब को यूज किया है. इफ द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज मोर देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट डज इट मीन? इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन वाटर देन इट विल सिंक. अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो वाटर के अंदर सिंक हो जाएगा. सिंक मीन कि वाटर में नीचे बैठ जाएगा. क्लियर? सेकेंड, रिवर्स ऑफ दिस, if the density of body is less than 1 gram per centimeter cube means its density is less than water, so it will float on water. Clear? And third is if its density is equal to water, means it is equal to 1 gram per centimeter cube or 1000 kilogram per meter cube, then what happens? Then it will half float or half submerge in water. As you can see in diagrams, if we observe all these 3 diagrams, in case A, the object will sink because its density is more than water. In second case, it will float because its density is less than water. And in third case, it is half submerged. What does it mean? It means its density is equal to water. That is 1 gram per centimeter cube. Clear? Second aspect of theory is weight. Weight, as we all know, weight is calculated in terms of force. Weight is a force. ठीक है? The force due to gravitational attraction of earth, as you all know, as you all study in the chapter of gravitation, what is weight? Weight is the force due to gravitational attraction of earth, that is called weight, and weight is equals to m into g. You will use this formula for the calculation of this experiment. Clear? What is the value of small g? That is 9.8 meter per second square, and it is known as acceleration due to gravity, and weight is measured by using the spring balance. As I show you the diagram of spring. Yes, this is the main procedure which is used for conduction of this experiment. तो बेसिकली बेटा अब इसमें आपको मैं बताऊंगी कि इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है. इसमें आप एक ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे, ठीक है. इसमें हमने मेटल बॉब को यूज किया है, ठीक है. उस मेटल बॉब की डेंसिटी आपको क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है. तो जो मेन प्रोसेस होता है इसमें, जब हम डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं, फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द डेंसिटी इन एयर. पहले आप उसे एयर में कैलकुलेट करेंगे, और जब हम उसे वाटर के अंदर डिप करते हैं तो वाटर में डिप करने से कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है, उसके वॉल्यूम को आप मेजर करेंगे, और उसकी हेल्प से हम डेंसिटी को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं. क्योंकि एज यू ऑल नो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो 2 रीडिंग्स आपको इसमें चाहिए. फर्स्ट इज मास ऑफ मेटल बॉब एंड सेकेंड इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. क्लियर? तो व्हाट इज द मेन प्रोसीजर? फर्स्टली एक मेटल बॉब को हम टाई करेंगे इसमें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस. तो आपको 2 यहाँ पे जो रीडिंग्स हैं वो मेजर करनी है. फर्स्टली यू विल मेजर द 0 एरर इन स्प्रिंग बैलेंस. जब तक आपने उस पर मेटल बॉब को हैंग नहीं किया है, पहले आप तब उसकी रीडिंग मेजर करेंगे कि उसका पॉइंटर 0 से ही स्टार्ट हो रहा है. सेकेंड, जब आप उस पर हैंग कर दोगे उस मेटल बॉब को, देन वी विल मेजर द वेट ऑफ द बॉब. ठीक है, वेट आपका कैसे कैलकुलेट होगा?
उसमें आपको रीडिंग डिस्प्ले होंगी, ठीक है, कि कितना मास उसका आया है. इट इज मल्टीप्लाइड बाय जी से हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा, वेट ऑफ योर मेटल बॉब. क्लियर. नाउ pour द वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर. आपने एक मेजरिंग सिलेंडर में वाटर ले लिया. देन यू विल ऑब्जर्व इट्स इनिशियल रीडिंग. जब तक आपने मेटल बॉब को उसके अंदर इमर्ज नहीं किया है, पहले हम उसकी वो वाली रीडिंग मेजर करेंगे. क्लियर. देन यू सस्पेंड द मेटल बॉब इन थ्रू द मेजरिंग सिलेंडर विद वाटर. आप उसे डिप कर देंगे. इफ इट इज डेंसर देन वाटर देन इट विल सिंक, और इफ इट इज लाइटर देन वाटर देन इट विल फ्लोट. क्लियर. तो अगर वो सिंक करेगा तो आपका वाटर जो है वो डिस्प्लेस होगा, और जितना वाटर डिस्प्लेस होगा यू विल मेजर दैट वॉल्यूम, दैट इज नॉन एज VF. रिकॉर्ड ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल. See the diagrams. This is the diagram spring balance, the material which is required for this experiment. In first section or in left side you can observe the zero error diagram of spring balance. Clear. And in second case you can observe the diagram with metal bob. पहले में हमारा पॉइंटर जो है वो जीरो पे है, दैट इज कॉल्ड जीरो एरर. सेकेंड में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हमने मेटल बॉब को हैंग किया तो जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है उसने रीडिंग शो कर दी 40 तक. 40 मीन्स इट इज मास, और इसको हम मल्टीप्लाई अगर 9.8 से या 10 से कर देंगे, हम डायरेक्ट 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इट बिकम्स 400, एंड दैट इज द वेट ऑफ दिस मेटल बॉब. You can observe the second diagram, that is measuring cylinder in which we filled the water. That is the initial volume of water. अगर हम इसमें observe करें, what is the initial volume of water? That is 40. अभी तक हमने इसमें कोई भी object sink नहीं किया है. In second diagram, when we insert this metal bob in the measuring cylinder, then it displaces from 40 to 60. Means how much rise takes place? That is 20 ml. Clear? Yes. Then what are your observations? अगर हम, because we want to calculate the density, and for density we will require mass and volume. Clear? So firstly we will take the weight of the solid, that is we are talking about the metal bob. Then what is the initial reading of spring balance? That is 0. फाइनल रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस विद मेटल बॉब, अभी मैंने आपको बताया दैट इज 14 मास मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो गई आपकी, दैट इज कॉल्ड 400. तो हमारा वेट कितना निकल के आया, दैट इज 400. तो वेट ऑफ द गिवन मेटल बॉब इज 400 न्यूटन. मास आपने वहां पे भी मेजर किया है, इस तरीके से भी हम मेजर कर सकते हैं. 400 डिवाइडेड बाय 9.8 दैट इज 40.8. दैट इज अवर मास ऑफ मेटल बॉब. क्लियर. सेकेंड थिंग इज वॉल्यूम. आपने इनिशियल रीडिंग ऑब्जर्व की थी, दैट वॉज 40. मेटल बॉब को इंसर्ट करने के बाद जो हमारी रीडिंग आई थी दैट वाज 60. एंड द वॉल्यूम ऑफ मेटल बॉब, अब कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, हमारा वाटर डिस्प्लेस हुआ 20 ml. क्लियर. कि जब हम मेटल बॉब को इंसर्ट करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय सॉलिड दैट इज 20 ml. क्लियर. अब हम हाउ वी विल कैलकुलेट द डेंसिटी. डेंसिटी इज कैलकुलेटेड बाय मास अपॉन वॉल्यूम, एंड योर मास इज 40.8 and our volume is 20. Clear. That is 2.04 gram per centimeter cube. Clear. Then it is your result. That was the main aim of the experiment, to determine the density of solid. So what is your density of solid? The density of given solid metal bob is 2.04 gram per centimeter cube, which was calculated by mass upon volume. What are the main precautions which are quite necessary for conducting this experiment is, first, the spring balance should be sensitive. Sensitive means your spring balance should not give faulty readings. For this you will observe the zero error, means your pointer should be at 0 when you start your experiment. Second thing is, the zero error in the spring balance should be recorded before it is used to find the weight of the solid, because if it is on another point then you get faulty readings. Clear. Next precaution is, record the readings carefully, both for spring balance and for measuring cylinder, because by using these two apparatus we will calculate mass and we will calculate volume, which is required for measuring the density of solid. Clear. And the last one is, the solid or metal bob which are using in this experiment should not touch the bottom, clear, or the sides of measuring cylinder. You will dip it. If it is heavier than water then it will sink, and you will observe the readings. Clear.